Spider-Man, one of the most popular superhero and one of the most popular character in general, जो one of the most relatable characters में से एक है. And ever since its inception, Spider-Man many different eras से गुजर चुका है, with many different interpretation of the character. चाहे हम बात करें comics, shows और live action की, there's a lot of variety, and with so many different Spider-Man, it's easy to say that most people will have their favorite interpretation of the character. चाहे वो हो the original Amazing Spider-Man, Ultimate Spider-Man, Miles Morales, 90s Spider-Man the Animated Series, Spectacular Spider-Man, Marvel Spider-Man, or the live-action Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield, and Tom Holland. Luckily, मैं एक person हूँ जो in the end most of these iterations को one way or another पसंद करता है. But there are three interpretations of this character जो मेरे heart के सबसे closest हैं. Spider-Man the Animated Series, Tobey Maguire's Spider-Man, and for comics, Ultimate Spider-Man. Arguably, ये iterations Spider-Man की most popular interpretations हैं in their respective mediums. जहाँ स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज को एक क्लासिक कंसीडर किया जाता है, टोबी मैगवायर को दी लाइव एक्शन स्पाइडरमैन बिकॉज ही वाज द फर्स्ट वन टू स्विंग इनटू थिएटर्स, एंड अल्टीमेट स्पाइडरमैन कॉमिक्स ने स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया टू यंगर जनरेशन इन ए मोर मॉडर्न एंड ग्रिडी स्टाइल. अर्ली एंड मिड 2000s कॉमिक बुक फैंस एंड नर्ड कल्चर के लिए एक काफ़ी ग्रेट टाइम था, जहाँ में कैरेक्टर्स फाइनली जनरल ऑडियंस में पॉपुलर होते दिखे ड्यू टू बिग बजट लाइव एक्शन मूवीज विद बिग नेम एक्टर्स एंड रीबूट मूवीज फॉर सम ऑफ दीज क्लासिक कैरेक्टर्स बाय सम ऑफ द मोस्ट वेल रिगार्डेड एक्टर्स इन हॉलीवुड. While at the same time, ये comic book industry के लिए एक new era की शुरुआत थी, as well as video games with 6th generation of consoles, which opened many possibilities in gaming. So with big popular characters came ways to make some big money as well. And भला gaming industry कहाँ पीछे रहने वाली थी? So here comes Activision with the license of many Marvel characters, but most importantly, Spider-Man. In early 2000s, with the absence of Batman and Superman, Spider-Man was easily the most popular superhero thanks to the amazing live-action adaptation of the character by Evil Dead fame Sam Raimi, जो himself Spider-Man के काफ़ी huge fan थे. So the success of Spider-Man in live action also became a success for interactive media, with Activision's Spider-Man, जो video game adaptation था Sam Raimi की movie का. Sam Raimi already sequel पर work start कर चुके थे, and Activision as well with Treyarch. And what game was one of the most well-regarded video game tie-in and superhero game in general. Released for all of these platforms in 2004, but हम mainly console versions के बारे में बात करने वाले हैं. Released for PS2, Xbox and GameCube. Spider-Man 2 एक open world action adventure game था, inspired by Grand Theft Auto 3, जिसमें हम हमारे friendly neighborhood Spider-Man को control करते हैं in the city of Big Apple, New York. Spider-Man 2 first superhero video game था to incorporate a proper open world design, जहाँ player इस entire city को explore कर सकते थे to their heart's content. And to do that, developers को basically two different models create करने पड़े for the entire city, ताकि वो players को एक sense of scale दे सके by showing the entire city in low poly details, and not to hide it with fog due to technical limitations. So with open world came a new traversal system. While the previous Spider-Man games had web swinging, हम उसे swing करना नहीं but उड़ना कहेंगे, because Spider-Man की webs किसी wall और building से नहीं but open sky से connect होती थी, जहाँ Uncle Ben ऊपर से Peter का सहारा बनते थे. So it's not really swinging but flying with Spider-Man iconography, जहाँ players Spider-Man के only basics movements को control कर सकते थे with no momentum and physics. So the tech director of Spider-Man 2, Jamie Fistrom, designed a system जहाँ web game world में actual building से connect होती है, and thanks to an AI assistant, players Spider-Man की momentum को control कर सकते हैं, making it easy to control his movements mid-swing. And not just web swinging alone. Game में other traversal systems भी हैं like charge jumps, wall running and web zipping, which combined with web swinging one of the most complex and robust traversal system create करती है, जहाँ players finally Spider-Man की web swinging को control कर सकते हैं, and due to its complexity, it takes a bit to get used to, but as a reward, player को one of the most fun and momentum-filled traversal system को experience करने का मौका मिलता है, जो even to this day inspiration है for modern Spider-Man games. But a barren open world is not that fun to explore. So Treyarch introduced city events and side missions, जिसमें players different crimes को रोकने की कोशिश करते हैं, like robbery, carjacking, और helping the citizens of NYC. Side missions mostly time trials हैं, like races, delivering pizza on time, जो Spider-Man fandom का एक काफ़ी big part बन चुका है. Pizza time. Meeting Mary Jane and boss arena जो unlock होती है after beating the campaign. There is not really many interesting side missions, and I hate how many of them are time trials. ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है जो एंटायर गेम में प्लेयर्स को फेस करनी होती है इवन इन द मेन मिशंस. एंड स्पीकिंग ऑफ मेन मिशंस, दे आर ग्रेट. एज वी कैन एक्सपेक्ट, गेम का मेन प्लॉट सेम है एज द मूवी, एंड सम ऑफ द एक्टर्स टोबी मैगवायर, अल्फ्रेड मोलिना एंड क्रिस्टन डंस्ट ने अपने रोल्स को रिप्राइज किया है, जस्ट नॉट दैट वेल. मोर इंटरेस्टिंगली, गेम में सम साइड स्टोरीज भी है कवरिंग मिस्टीरियो, राइनो, शॉकर एंड ब्लैक कैट, एंड इन माई ओपिनियन दीज वर द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द गेम, स्पेशली मिस्टीरियो एंड ब्लैक कैट.
because both of these characters oozes personality compared to the main characters. And voice actors did a great job, especially Holly Fields as Black Cat. She's the character who sounds like she's actually having fun, and her interpretation of Black Cat is really great, and plays really well off of Tobey Maguire's Spider-Man. Was that as good for you as it was for me? I have to admit, you were right. I feel much better. You see? I told you, baby. Stick with me and you'll be fine. Come see me next time you're feeling down, alright? I'll see you around. Also, since हम voice acting की बात कर रहे हैं, then how can we forget our beloved Evil Dead fame Bruce Campbell, जो just like previous game narrator का role अदा करते हैं, and he's funny like always. Well, sequel time already, huh? Welcome back, I guess. I'm sure you missed me more than I missed you. Anyway, things have changed around here since last time, so they dragged me back at great expense to explain what's up. Also, आप में से किसी ने अभी तक Evil Dead franchise नहीं देखी है, then go and watch it. It's one of the goats in horror genre. And finally, we have combat, जो काफी simple but fun है. It's your basic beat 'em up with your fast attack, heavy attacks, grapple attacks, and some really ridiculous Spider-Man moves, making it quite fun to play. Also, counterattacks, जो most likely एक big inspiration था for Batman Arkham's free flow combat. Without any hard feelings and nostalgia, I can say Spider-Man 2 still a great game है. But more than that, ये superhero games के लिए एक huge step था in the right direction, जिसे still to this day many superhero games as an inspiration use करते हैं, like future Spider-Man games and even Batman Arkham series to some extent. And I think this game does deserve the recognition it gets when we talk about superhero games. It's really good and everyone should play it at least once. But there is another Spider-Man game released in 2005 जिसे मैं much more prefer करता हूँ. And I think it is still my favorite Spider-Man game to this day, other than Marvel Spider-Man and Spider-Man Web of Shadows, because I haven't played those games yet. And वो game है Ultimate Spider-Man. Released in 2005 for all of these consoles, Ultimate Spider-Man, just like its predecessor, एक open world action adventure beat 'em up है, built upon the gameplay foundation laid by Spider-Man 2. And in my opinion, ये game most aspects में objectively better है compared to Spider-Man 2, especially in its story and presentation. As the name suggests, Ultimate Spider-Man adaptation है Ultimate Spider-Man comics का, but it's not really a direct adaptation, but a continuation of Ultimate Spider-Man story. Specifically, the Venom story arc, जिसे लिखा है Brian Michael Bendis ने, the same writer who wrote Ultimate Spider-Man comics. And this game was treated as canon to the comic story for a while, until Brian Michael Bendis retconned it and retold the same story in comics in a different way. So written by an actual comic book writer, the story in Ultimate Spider-Man is really great, especially if you're a fan of Ultimate Comics, which I am. And game की presentation story को 4 चांद लगा देती है. Due to it being based on a comic book, Ultimate Spider-Man heavy inspirations लेता है from its comic book counterpart. And ये game basically एक comic book है जिसे हम खेल सकते हैं. The entire art direction Ultimate Spider-Man से inspired है, and Treyarch did a phenomenal job bringing this comic to life with amazing cel-shaded art style and overall design of the locations characters जो full of personality हैं and still to this day amazing लगती हैं. I wish more superhero games इस art style का use करें, but I don't think that will happen in modern video game landscape. Also, the voice acting and soundtrack are really well done, जिसके लिए मैं biased हूँ due to the nostalgia, but the soundtrack is genuinely good and really memorable. So the story and overall presentation are top notch, but what about the game part of the game? Well, as I said before, Ultimate Spider-Man basically builds upon what came before. So the overall gameplay design pretty much same है as Spider-Man 2, जहाँ हमें एक big open world मिलता है to explore and do random city events, side missions and main campaign. But there's a huge difference between this time around, and what difference है? Venom. So in Ultimate Spider-Man, we have 2 playable characters, our friendly neighborhood Spider-Man and the lethal protector Venom. Both characters drastically different हैं, जहाँ Spider-Man more agile and fast character है in both traversal and combat, and Venom more of a slow but powerful character. Spider-Man's gameplay pretty much same है as Spider-Man 2, but web swing एक ऐसा aspect है जिसमें Ultimate Spider-Man inferior है compared to Spider-Man 2, because players के पास overall less options हैं in web swing. But it does feel good, and Spider-Man is a lot more agile and easy to control. Plus, web zip in this game downright amazing है. So the overall web swinging gameplay is a bit more simplistic but more responsive as well. And other than that, it's pretty much same. Combat on the other hand drastically different है. Spider-Man 2 का overall combat system combos and aerial attacks पर focus करता है, while in Ultimate Spider-Man, it's about how you use Spider-Man's agility. Players के पास basic light and heavy attacks हैं with some aerial and web based attacks.
बट सिंस अल्टीमेट स्पाइडरमैन इज ऑल अबाउट एजिलिटी, प्लेयर्स इन्वायरमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, बॉल्स टू बी मोर स्पेसिफिक, जिनका यूज़ कर प्लेयर्स बाउंस अटैक यूज़ कर सकते हैं, एंड मिक्सिंग देम अप विद कॉम्बोज इज रियली सेटिस्फाइंग। आफ्टर डिफीटिंग द एनिमीज, प्लेयर्स को उन्हें वैप भी करना पड़ता है, अदरवाइज दे विल बी बैक टू फाइट, समथिंग आर्कम सीरीज डेफिनेटली टुक इंस्पिरेशंस फ्रॉम। ऑन द डार्क साइड, वैनम एक हल्किंग बीस्ट है, जिसका मेन वे ऑफ ट्रिवर्सल एक ह्यूज लीप है, सिमिलर टू हल्क, and web zip to control movement mid jump and to cover short distances. Ultimate Venom एक strand based character है, जिसके attacks brute force and grapple based हैं. He can use his tentacles for fast and distant attacks and fist for hard hitting attacks, and grapple for throwing things around and one hit kills जो absolutely brutal है, like breaking your entire body in half brutal. बट स्ट्रैंथ का एक डिसएडवांटेज है, सिंस वैनम एक सिम्बियोट है जो अपने होस्ट की लाइफ फॉर्म को यूज़ करता है टू लिव, प्लेयर्स को एज वैनम एनिमीज एंड सिविलियंस की लाइफ फॉर्म को कंज्यूम करना होता है, अदरवाइज वैनम आईडी को कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेगा एंड गेम ओवर। सो कंज्यूमिंग पीपल वाइल फाइटिंग एनिमीज वैनम के गेम प्ले का एक इंटेग्रल पार्ट है, एंड इट्स सरप्राइजिंगली अनोइंग और डिफिकल्ट नहीं है, एटलीस्ट इफ द प्लेयर नोज व्हाट दे आर डूइंग। फॉर्मेशन डिज़ाइन ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है थ्रू आउट द एंटायर गेम। हम कैंपेन मिशंस के लिए बोथ स्पाइडरमैन एंड वैनम के बीच स्विच करते हैं, एंड द ओवरऑल मिशन स्ट्रक्चर pretty much सेम है फॉर बोथ कैरेक्टर्स, जहाँ मिशन बॉस को चीज करते हैं वाइल सेविंग सिविलियंस और डिफीटिंग एनिमीज, एंड इन द एंड मिशन कंक्लूड होता है विद द प्लेयर डिफीटिंग दैट बॉस। ये सेम स्ट्रक्चर ईच एंड एवरी बॉस के लिए यूज़ किया है, एंड इट डजंट रियली गेट ओल्ड एंड बोरिंग सिंस द मेन कैंपेन इज ओनली अराउंड 4 to 5 hours long. For side missions, we have Combat 2 and Races, जो both fun to play है, especially the Races, because of how smooth web swinging feels in this game. After completing the campaign, player गेम की ओपन वर्ल्ड में एज वैनम खेल सकते हैं, एंड टू पुट इट सिंपली ये गेम बेसिकली GTA बन जाता है विद एन वांटेड लेवल एंड हाई स्कोर सिस्टम, जिसमें तबाही मचाने पर प्लेयर को स्कोर किया जाता है, एंड दी हायर द स्कोर दी हायर द वांटेड लेवल, जिसमें वैनम मैन डिफरेंट एनिमी टाइप्स को फेस करता है, एंड इट्स रियली फन इफ नॉट इन डेप्थ एक्टिविटी। अदर देन दीज, प्लेयर्स ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर कलेक्टेबल्स कलेक्ट कर सकते हैं, जो एज बोनस कैरेक्टर बायोस, कॉमिक बुक कवर्स, कंसेप्ट आर्ट्स एंड सूट्स अनलॉक करते हैं, जिन्हें प्लेयर ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज प्रीटी मच व्हाट अल्टीमेट स्पाइडरमैन इज, अ शॉर्ट एंड सिंपलिस्टिक बट रियली फन गेम, जो एक लव लेटर है टू अल्टीमेट स्पाइडरमैन कॉमिक्स एंड मार्वल इन जनरल। आई कैन क्लियरली सी द पैशन बिहाइंड दिस गेम, जो वन ऑफ द रीजन्स में से एक है वाई आई लव दिस गेम सो मच एंड वाई आई प्रेफर इट ओवर अदर स्पाइडरमैन गेम्स। ये बेसिकली एक टाइम कैप्सूल है टू माई चाइल्डहुड एंड एक कंफर्ट फूड जिसे मैं अगर चाहूँ तो एक आफ्टरनून में कंप्लीट कर सकता हूँ। इन कंक्लूजन, बोथ ऑफ दी स्पाइडरमैन गेम्स अमेजिंग है इन देयर ओन रिस्पेक्टिव वेज, वन फॉर पायनियरिंग ओपन वर्ल्ड सुपर हीरो गेम फार्मूला एंड अदर एज लव लेटर टू द कैरेक्टर एंड अल्टीमेट मार्वल एरा, एंड मैं ईजिली बोथ ऑफ दीज गेम्स को रिकमेंड कर सकता हूँ टू एनी सुपर हीरो गेम फैन, स्पेशली अल्टीमेट स्पाइडरमैन, because it has aged amazingly thanks to its simplicity and cel-shaded graphics. But in the end, both of these games worth playing है, and for a long time इन्हें best Spider-Man game माना जाता था. And even to this day, ये games worth playing है, something I might not be able to say for some of the future Spider-Man games, but that's for another video. Until then, stay safe, stay healthy, and I will catch up with you guys on the next video. Bye guys, peace. Help! Please! Someone! I'm going to die!